Assalamu alaikum viewers. Welcome to the Discover Content, my YouTube channel. Like and subscribe for more interesting videos. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी गेस्ट पेपर 2022 क्लास 9। ये गेस्ट पेपर तमाम पंजाब के एजुकेशन बोर्ड्स के लिए है। ये गेस्ट पेपर तैयार करने से गारंटी है कि आप 55 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं? ये हैं व्हाट इज़ पैरासाइट्स, डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, डिफाइन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई ब्रांच लाजमी पेपर में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप तमाम ब्रांचेस जो बायोलॉजी के हैं वो तैयार करें। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बू अली सीना, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, फायर लेवल, डिफरेंस बिटवीन सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल, व्हाट इज स्पीशीज, राइट एन एग्जाम्पल, difference between vegetative organs and reproductive organs, difference between micromolecules and macromolecules with example। इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो ये हैं। डिस्क्राइब पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड colonial ऑर्गेनाइजेशन। What is organs? Explain organ system level। चैप्टर नंबर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हैं। डिफाइन साइंटिफिक मेथड, राइट डाउन नेम मेथड, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रपोर्शन, एक्सप्लेन द सिंबल ऑफ डेंगू फीवर, how data organization define theory and law, explain deduction। स्टूडेंट, इस यूनिट में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 पे। इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं। बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड मेथड, डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स, difference between flora and fauna, write down simple classification of human, what is meant by endangered species, any two endangered species in Pakistan, what is meant by deforestation, difference between extinct and endangered species, write three characteristics of terra। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विद एग्जांपल्स, explain three main types of organisms placed in kingdom protista। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे। इसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं। राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, डिस्क्राइब टू फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, draw the diagram of mitochondria and write the name of its two parts, write two functions of lysosomes, write the act of reverse osmosis, difference between diffusion and osmosis, what is meant by hypertonic and hypotonic solutions, difference between endocytosis and exocytosis, what are sclerenchyma tissues, give two function performed by cytoplasm। इस यूनिट में लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ड्राई डायग्राम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल एंड लेबल इट्स एनी 6 पार्ट्स, व्हाट आर प्लास्टिड्स, डिस्क्राइब देयर टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो है सेल साइकिल। मियोसिस एंड माइटोसिस।
Define crossing over. Difference between apoptosis and necrosis. Explain S phase cell cycle. Difference between chromatin and chromosome. Define G0 phase. Define mitosis. In which cell it occurs. Difference between karyokinesis and cytokinesis. Difference between somatic cells and germ cells. What basic difference in cell division of plants and animals? इस यूनिट में लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. डिस्कस 4 phases ऑफ इंटरफेज ड्यूरिंग सेल साइकिल. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ जो है एंजाइम्स. इसके शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी. हाउ एंजाइम्स अफेक्ट ऑन इट. राइट नेम्स ऑफ 4 एंजाइम्स. डिफाइन मेटाबॉलिज्म. नेम इट्स 2 types. What is metabolic pathways? Difference between prosthetic group and describe the use of enzymes in food industry. What is meant by active site in enzyme? Define optimum temperature. How pH affects on enzymes action? Give an example. Define induced fit model of enzyme. Question है, what are enzymes? Describe 5 characteristics of enzyme. Explain the mechanism of enzyme action. Enzyme effect of temperature and substrate. Concentration on the rate of enzyme action. अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ जो है बायोइनर्जेटिक्स. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं. राइट डाउन द 3 सब यूनिट्स ऑफ एटीपी. व्हाट इज मेंट बाय बायोएनर्जेटिक्स. व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. Define respiration and cellular respiration. Name the compounds produced during respiration. Difference between aerobic and anaerobic respiration. Define alcoholic fermentation with equation. What is meant by anaerobes. Define glycolysis. Difference between photosynthesis and respiration. इसके important long question है. What do you mean by photosynthesis? Describe difference between photosynthesis and respiration. Explain the summary of light reaction and draw a diagram of Z scheme. अब चलते हैं यूनिट की तरफ. इसका नाम है न्यूट्रिशन. इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं. डिफाइन मैस्टिकेशन. हाउ डज आयोडीन फंक्शन इन आवर बॉडी. व्हाट इज मेंट बाय माल न्यूट्रिशन. Difference between assimilation and absorption. Difference between bolus and chyme. Describe the function of pepsin in stomach. Write the causes of ulcer. Balanced diet differs with age and gender. Explain. Define nutrition. Difference between organic and inorganic fertilizer. And the effect of deficiency of nitrogen and magnesium on the plant. Important long question है. Write down the importance of fertilizer. Describe the minerals deficiency diseases. Write 4 function of liver. Unit number 9 है transport. इसके important short question है. Write the function of root in plant. Difference between source and sink. What do you mean by blood? Write composition of a healthy man. How is plasma separated from blood? How many types of cells are found in blood? Write 2 names of these. What do you mean by pus? How is formed? What is systematic circulation? Define serum. Write the names of different chambers of human heart. What is the role of pericardial fluid? Define universal donors, universal recipients. Important long question है. How uptake of water and ions take place in plants? Write a note on ABO blood group system. I hope so आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. लाइक करना ना